Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivardhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Girivardhari. Jaya Radha Madhava, Jaya. Hare Krishna. So, a very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Ashtaprayeshvabhadreshu
नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. So in our previous session, we discussed Lord Brahma. In this chapter, he is talking about how the Lord is not very pleased with Sakama Bhaktas, those who are devotees with material desires. So Lord is not very much impressed with them. Sakam Bhaktas means those devotees who have material desires also along with devotion. Mixed devotees. And pure devotees are Nishkam Bhakta. Those who have no material desires, their only desire is to satisfy Krishna. So the Lord, he likes Nishkam Bhakta and he does not like, he is not very impressed with Sakam Bhaktas. But still he blesses Sakam Bhaktas with material things or material facilities. But he does not like them because he is not very impressed with them because they are engaged in this material world and the Lord wants all his devotees back to him. So those who are Sakam Bhaktas, they have material desires and the Lord, he has to fulfill those material desires because they worship the Lord. But the Lord is not satisfied with them because they have no desire to go back to Krishna. Whereas those who are Nishkam Bhaktas or pure devotees of Krishna, they, after this giving up this body, they go back to Krishna, which the Lord wants. And that's why the Lord is very happy, very pleased with his pure devotees, because they do everything for the pleasure of the Lord. And those who are non-devotees, they keep suffering in this material world perpetually. Now today, we'll begin our discussion with text 13, Shloka number 13 of the 9th chapter of the 3rd Canto of Srimad Bhagavatam. Punsamato vividha karmabhir advaradhyair dane nachogra tapasa paricharya yacha आराधनम भगवतस् तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करिहिचित् म्रियते न यत्र पुंसामतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर् दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करिहिचित् म्रियते न यत्र. Translation. But the pious activities of the people, such as performance of Vedic rituals, charity, austere penances, and transcendental service performed with a view to worship you and satisfy you by offering you the fruitive results, are also beneficial. Such acts of religion never go in vain. Now you see, what is Lord Brahma saying here? So he is saying that punsam ato vividha karmabhir advaradhyay. Danena cha ugra tapasa paricharyaya. So people perform various rituals like danena. Danena is charity. Cha ugra tapasa, severe austerities. Ugra tapasa. Tapasa means austerity and ugra means severe. So ugra tapasa. Paricharyaya. Paricharyaya means devotional service to the Lord or worshipping the Lord in the temple. Aradhanam Bhagavatas. Aradhanam Bhagavatas means to worship Krishna. Aradhana means to worship Krishna.
in devotion. Satkriyartho. All these activities are Satkriya. Satkriya means, Asatkriya means material work. Satkriya means transcendental, spiritual work which is meant to satisfy Krishna. So Satkriyartho, arth means to satisfy Krishna. Dharmorpitah karhichit mriyate na yatra. Dharmo. So all these activities are religious activities, and those who perform these activities, their endeavor, their effort is never destroyed or never go in vain. Any spiritual activity that we do, it never goes in vain. It is always beneficial for the soul, Atma. So basically, here in this shloka, Lord Brahma is talking about those devotees who believe in performing various rituals for devotional service of the Lord. Many people, they are attracted to such ritualistic activities. They believe in having pompous ceremonies. Even when it comes to worshipping the Lord, they believe in big things, big services, big opportunities. And they believe in big performances, huge assembly rituals. But ultimately, you see, in this shloka, it is mentioned that all these things, even if it is done, but for the pleasure of the Lord, then it benefits a person. Why? Because Krishna says in the Bhagavad Gita that Yat karoshi yat juhoshi yad ashnasi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. In the 9th chapter, the 27th shloka of the Bhagavad Gita, Lord Krishna talks about it. That Arjun, whatever you do, whatever you eat, whatever activities you perform, whatever charity and whatever austerity you perform, everything should be done as an offering unto me. So what does it mean? That whatever activities we do, it must be done in such a way that the result of all our work must be offered to Krishna. Right? So any activity that we do for the pleasure of the Lord, it has a permanent benefit. Even though a person may offer whatever little he can to Krishna, that gives him permanent spiritual value. So anything we do for the pleasure of the Lord, it is eternal because it is spiritual in nature. Anything that we do for our pleasure, our sense gratification, that is temporary in nature. Right? So spiritual work is eternal in nature and it does not end with the body. Material work is temporary and it ends with the body. Just like a person may be a big businessman, a person may be an engineer or a doctor or an IAS officer. But will he become an engineer or a businessman or a doctor in the next life? No. So all material degrees, all material big positions, all material work will end with the body. Whereas all spiritual work that we do, for example, if a person is a devotee in this life, will he become a devotee in next life? Yes. Anyone who has rendered even little devotional service to the Lord, next life will be born in such a family from where he can continue his devotional service. If it is not complete.
If it is complete, he will go back to Krishna. He'll get liberation. But if it is not complete, his bhakti, his devotional service, incomplete, still he takes birth in such a family on this earthly planet or in any planet in the universe so that he can continue his devotional service from where he left. This is the beauty of spiritual work. This is the beauty of spiritual life. Sometimes people don't even know that they are serving the Lord. Small kids, when they come in the temple, they hear the name of Krishna. They don't know that they are acquiring Agyat Sukriti. Agyat Sukriti means they don't know that they have offered their service to Krishna. Although they don't know, but they get eternal spiritual credit for it. So even if a person is not a pure devotee, if he keeps offering the results of his work to Krishna, a time will come when he will become a pure devotee gradually, because he keeps developing Agyat Sukriti, and because of that he advances in devotional service, and gradually he becomes a pure devotee, either in this life or in next life or in few lifetimes, but ultimately he'll become a pure devotee one day. So that is what Lord Brahma is saying here in this shloka. Now text 14, shloka number 14. Shashvat swarupamahasaiva nipita bheda mohaya bodha dhishanaya namah parasmay vishvodbhava sthiti layeshu nimitta leela rasayate nama idam chakrimeshwaraya shashvat swarupamahasaiva nipita bheda mohaya bodha dhishanaya namah parasmay विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम idam chakrimeshwaraya. Translation: Let me offer my obeisances unto the supreme transcendence, who is eternally distinguished by his internal potency. His indistinguishable impersonal feature is realized by intelligence for self-realization. I offer my obeisances unto him who, by his pastimes, enjoys the creation, maintenance, and dissolution of the cosmic manifestation. Now you see, Lord Brahma is saying that Shashvat Swarupa Mahasa Iva Nipita Bheda. Shashvat Swarup, Shashvat means eternal. So Shashvat Swarupa Mahasaiva Nipita Bheda Mohaya Bodh. Mohaya Bodh. A person, so Lord Brahma, he is saying that a person is able to distinguish the Lord from ordinary human beings because of his internal potency. Right? And Mohaya Bodha Dhishanaya Namah Parasmay, and all the devotees, they offer their respectful obeisances. You see, Namah. Namah means respectful obeisances to Krishna. We all have to offer our respects to Krishna. Vishvodbhava sthiti layeshu nimitta leela. Vishva Udbhava, the creation of this material universe. Sthiti layeshu, for creation, maintenance, and destruction.
creation, maintenance, and destruction of this material world are, you see, Nimitta Leela. They are all Leela, they are all pastimes of Krishna. This world has not been created by us, neither it will be created for our pleasure. No. It is created for Krishna's pleasure, this material creation. So it is his Leela, his transcendental pastimes. Rasayate nama idam chakrimeshwaraya. Rasaya, rasa means pleasure. So these are all meant for Chakrimeshwaraya, Chakra, Chakrima, Ishwaraya. So Lord Brahma is saying that all these activities are performed for your pleasure, my dear Lord. All these activities are performed for your pleasure. So this material world, basically, in this material world, everything is meant for, whether it is the spiritual world or the material world, everything is meant for Krishna's pleasure. So this whole material creation is a pastime of the Lord, and this is an external manifestation of the internal potency of the Lord. This material world is external potency, which is distinguished from internal potency. That means there is difference between internal potency and external potency. External potency, the Lord personally is not involved in the external potency. His empowered representatives are running it. This external potency or this material world is just like an office. A person has his home and he has his office. The same person, right? The same person, he has his home and he has his office. So at his home, he'll be nicely playing with his kids. Just like it so happened once that there was a person, a big businessman, and he went to a country. He was a big industrialist. So he wanted to set up a big factory or a big industry in a neighboring country. So he went to meet the president of that country, the president of the neighboring country. So when he went to the president's house, of course, president's house is like palace. So he was like mesmerized by the opulence of this president house. So he went in the office of the president of that country, who is almost like the king of the country. So this person, he told the secretary of the president that I have got an appointment with the president of this country. So the secretary or the personal assistant of the president, he told this person that, okay, you sit for some time. President is busy. So he was waiting. So he reached in the morning and his there was a flight back to his country in the evening. So he thought that in some time I'll conduct the meeting with the president of this country and then I'll leave back to my home country. So he was sitting there in the office waiting for the president to call him inside his cabin, inside his office. So he waited for a long time.
and time kept passing by and the president's call did not come. So he was inquisitive to know what is the president doing inside. So next to him, where he was sitting, was the window from where he could remove the curtain little bit and he was able to peep inside the window. So he somehow peeped inside the window. He saw that president is busy in what? So he's carrying his grandson on his shoulders and he's playing with his grandson. You see, president of a country. He's acting like a horse and the grandson is sitting on his shoulder. Just imagine. So what does it mean? That president is in his office, everyone is worshipping him like, oh, your majesty. He is worshipped, a president of any country. But at his home, he's treated like an ordinary person. Although he is the president, he is the greatest personality in a country, but at his home, no one treats him like president. His grandson will come and kick him. He will have to put his grandson on his shoulder and he has to play with him. His mother will come and scold him. So same with Krishna. So the internal potency, the spiritual world is the internal potency of Krishna. That means it is like home. It is home of Krishna. And this external energy or this material energy is like office. This is office for Krishna. So in office, Krishna is in the form of Vishnu. So Lord Vishnu, he is worshipped with awe and reverence. Everyone folds his hand and approaches him. No one can approach him. So this material world is like the office of Krishna. Everyone comes there with folded hands, worshipping the Lord with awe and reverence. But in his original home, which is in the spiritual world, in Golok Vrindavan, Krishna is just like people treat him there like an ordinary boy. Although he is not an ordinary boy, but still, just like in Vrindavan, Mother Yashoda, she used to treat Krishna like her child, like her pet child. She would beat him sometimes. She would love him. She would kiss him. So that is because that is internal potency of Krishna and this material world is external potency of Krishna. Here everyone worships Krishna with awe and reverence, whereas in the spiritual world there is no awe and reverence. There is intensified devotion, intensified love for Krishna. That's why it is called internal potency of Krishna. Now text 15, shloka number 15. Yasyavatara guna karma vidambanani namani ye suvigame vivashagrinanti tenaika janma shamalam sahasaiva hitva samyantyapavritam tamajam prapadye. Yasyavatara guna karma vidambanani namani ye suvigame vivashagrinanti tenaika janma shamalam sahasaiva hitva samyantyapavritam tamajam prapadye. Translation. Let me take shelter of the lotus feet of him whose incarnations, qualities, and activities are mysterious imitations of worldly affairs. One who invokes his transcendental names, even unconsciously, at the time he quits this life, certainly is immediately washed off the sins of many, many births and attains him without fail. You see, so Lord Brahma, he is saying that yasya avatara guna karma vidambanani.
Vidambanani. Vidambana means mystery. Vidambana, it is bewildering for conditioned souls. The pastimes of Krishna. He lifted Govardhan hill. He killed great demons like Putana, Aghasur, Arishtasur. So these activities are not ordinary activities and they sometimes bewilder a conditioned soul. Vidambanani. Namani ye suvigame vivasha grinanti. Namani. And one who chants the Nam, the holy name of Krishna, Vivasha. Vivasha means even though unconsciously. Vivasha means in a helpless state or even unconsciously, if a person chants the holy name of Krishna, and te naika janma shamalam sahasaiva hitva, te anek janma shamalam. Shamalam means all his sinful activities which he accumulated for many, many births. Sahasaiva hitva. Hitva means destruction. So all his sinful activities, all the sinful reactions which a person has accumulated for many, many lifetimes, it all gets wiped out and destroyed immediately. Samyanti apavritam ritam. And then Lord Brahma is saying that all the sinful reactions of a person who has chanted the holy name of the Lord gets destroyed, and they samyanti apavritam ritam, and they become amrit, they become immortal, they attain spiritual world, they go back to Krishna, back to home, they attain liberation, such devotees. And Lord Brahma is saying, Tam ajam prapadye, and I take shelter of Krishna. I take shelter of such beautiful transcendental Lord, Sri Krishna. You see, so Krishna's activities in this material world, the incarnation, the Lord, when he appears in this material world, he performs many activities. It looks worldly, but it is not worldly. It looks like he's acting materially, but he's never acting materially. The Lord, even though he's present in this material world, may look like an ordinary person to some non-devotees, but still his activities are all on a transcendental plane. Just like a king, sometimes he goes to see how his citizens who are in the prison house, how they are doing. Sometimes he goes to meet the prisoners in the prison house. Now that does not mean that the king will become a prisoner. No. Although he is in the prison house, but the laws of the prison house do not apply on the king of the country. Isn't it? The law of the prison house does not affect the king. Similarly, although the Lord comes in this material world, but he is always separate from the material laws. Material laws do not apply on him. So he acts like an actor on a stage. An actor may act on a stage, but he is not that person exactly. He may act like a beggar, but he is not a beggar. So Krishna may act like an ordinary living entity, but he is not an ordinary person. He is always the Supreme Lord under all conditions. So that is why here Lord Brahma is saying that chanting the holy name of the Lord and remembering the pastimes of the Lord is as good as touching Krishna. They are non-different. And anyone who chants the holy name of the Lord and he hears the pastimes of Krishna, he is immediately, you see the word is used, Samyanti apavritam ritam. Immediately he becomes free from all material conditioning and he attains liberation.
And Lord Brahma says that I take shelter. I want to take shelter of that Supreme Lord. So Lord Brahma is a pure devotee and he wants to take shelter of that Supreme Lord. So all of you can like the video, you can comment, you can subscribe to our YouTube channel, try to share as much as possible. We'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत। आज के भागवत के सत्र में प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्रों में ब्रह्मा जी इस अध्याय में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं भगवान को कि जो सकाम भक्त हैं, जो भगवान के भक्त तो हैं लेकिन साथ ही साथ उनमें भौतिक इच्छाएं भी हैं, उनसे भगवान बहुत अधिक संतुष्ट नहीं होते। उनसे भगवान को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उनमें भक्ति तो होती है लेकिन साथ ही साथ भौतिक इच्छाएं भी होती हैं। तो भगवान उनकी भौतिक इच्छाएं तो कई बार पूरी कर देते हैं, लेकिन भगवान चाहते नहीं है कि कोई भी उनका जो अंश है, जो जीव है, वो यहाँ पर रहें इस जड़ जगत में। वो चाहते हैं कि सभी उनके साथ रहें।
लेकिन जो सकाम भक्त होते हैं, सकाम भक्त मतलब मिश्रित भक्त, जिनमें भक्ति भी है और भौतिक इच्छाएं भी साथ ही साथ, मिश्रित भक्ति है जिनकी, तो भगवान चाहते हैं कि सभी उनके पास वापस आ जाएं, लेकिन जो मिश्रित भक्त है उनमें भौतिक इच्छाएं हैं तो वो वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए भगवान उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी कई बार कर देते हैं, लेकिन भगवान उनसे बहुत संतुष्ट नहीं होते। और जो निष्काम भक्त है, निष्काम भक्त का मतलब शुद्ध भक्त, जिनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है और वो भगवान के तुष्टि के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, तो निष्काम, तो इसलिए वो निष्काम भक्त हैं और वो भगवान को अति प्रिय हैं, क्योंकि वो भगवान को तुष्ट करने के लिए अपना जीवन जीते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमने देखा आपने पिछले अध्याय में अंतिम श्लोक में, कि जो अभक्त लोग होते हैं वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं और इसीलिए इस जड़ जगत में उनका वास जो है वो एक तरीके से शाश्वत हो जाता है। तो वो भगवान को पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अब आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक से। 13वां श्लोक। पुंसामतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर् दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्हिचित् म्रियते न यत्र। पुंसामतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर् दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्हिचित् म्रियते न यत्र। Translation. But the pious activities of the people, such as performance of Vedic rituals, charity, austere penances, and transcendental service, performed with a view to worship you and satisfy you by offering you the fruitive results, are also beneficial. Such acts of religion never go in vain. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो भगवान श्री कृष्ण, तो ब्रह्मा जी परम पुरुषोत्तम भगवान से कह रहे हैं कि लोगों के जो सत्कर्म हैं, जैसे दान, तपस्या, भगवान की सेवा और भगवान को तुष्ट करने के लिए जो भी कर्म मनुष्य करता है अपने कर्मों को समर्पित करके, वो सभी उसके लिए लाभकारी हैं और इस तरह के धर्म के कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अब आप देखिए, तो कह रहे हैं कि पुंसाम अतो विविध कर्म भेद, तो मनुष्य अलग अलग तरह के कर्म करता है। दाने न, दान करना, उग्र तपस्या करना, परिचर्या का मतलब भगवान की पूजा करना। अब देखिए श्लोक में दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि दान करना, उग्र तपस्या करना। उग्र तपस्या मतलब, उग्र तपस्या मतलब बहुत ही भारी तपस्या करना। परिचर्या भगवान की पूजा करना। आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो, भगवान की आराधना करना। और इस तरह के अलग अलग तरह के सत्क्रिया, सत्क्रिया मतलब शुद्ध कर्म, अच्छे कर्म, भगवान भगवत कर्म जो कहते हैं। धर्मोर्पितः, तो इस तरह से अलग अलग धर्म के कर्मों को, अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना। तो इस तरह के कर्म जो लोग करते हैं वो म्रियते न यत्र, उनके कर्म कभी नष्ट नहीं होते।
तो सत्क्रियार्थ हो। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी की जो भी धर्म के मार्ग पर चलेगा और इस तरह की क्रियाएं करेगा भगवान को तुष्ट करने के लिए, उसके कर्म कभी या उसका कर्म कभी उसका विनाश नहीं होगा। अब आप देखिए, तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े आयोजन करना चाहते हैं, भगवान की पूजा करना चाहते हैं, बड़ा भव्य आ, आयोजन करके। तो ये गलत नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं कि यद करोषि यद जुहोषि यद अश्नासि ददासि यत् यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में कि अर्जुन, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित करके करो। ठीक है? तो बड़े बड़े कोई आयोजन भी करे, जो भी कुछ करे, भगवान को अपना जब कर्म हम समर्पित करते हैं, कर्म के फल जब हम भगवान को देते हैं, तो उस ये सारे जितने भी कर्म है, दान करना, तपस्या करना, भगवान के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको पुष्ट करने के लिए, वो शाश्वत कर्म होते हैं, इसलिए उनको सत्कर्म कहते हैं। इस भौतिक जगत में जो हम कर्म करते हैं वो जड़ कर्म कहलाते हैं और वो शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। कोई भी जड़ कर्म जो है, जो हम जड़ शरीर से करते हैं, वो सब शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे यदि इस शरीर में, इस जन्म में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्या अगले जन्म में वो डॉक्टर बनेगा? नहीं। तो शरीर के साथ जो भी जड़ कर्म हम कर रहे हैं वो नष्ट हो जाता है। लेकिन भक्ति अगर हमने की है तो क्या वो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा? नहीं। आध्यात्मिक आयाम पे जो भी हम क्रिया कर्म करते हैं, भगवान को तुष्ट करने के लिए जो भी कर्म करते हैं, वो शरीर के साथ नष्ट नहीं होता, बल्कि जितना हमने किया है, अगर पूर्ण नहीं भी की भक्ति अपनी, पूर्ण कर लेंगे तो सीधा भगवत धाम वापस चले जाएंगे। लेकिन यदि पूर्ण नहीं किया है तो भी अगले जन्म में हमको ऐसा जन्म मिलता है जिससे हम अपनी भक्ति को पूरी कर सकें। वहां पे हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने इस जन्म में खत्म किया है। तो ये सत्कर्म यानी भगवत कर्म का लक्षण है कि वो शरीर के साथ नष्ट नहीं होता। तो कोई जाने अनजाने में भी इस तरह के कर्म कर दे तो भी उसको लाभ हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान का प्रसाद ले लेते हैं, उनको पता नहीं है कि वो उन्होंने भगवान की सेवा कर दी है। इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। हमें पता नहीं है हमने भगवान का जाने अनजाने में सेवा कर दिया है। तो इस तरह से मनुष्य जब सेवा करता रहता है भगवान की, तो एक समय आता है जब वो शुद्ध हो जाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है, और उसके बाद वो भगवत धाम वापस इस शरीर को छोड़ने पर चला जाता है। तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं कि इस तरह के कर्म जो सत्कर्म होते हैं, भगवत कर्म होते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। 14वां श्लोक। शश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदं चक्रिमेश्वराय शश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला
रासायते नम इदम चक्रिमेश्वराय। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Let me offer my obeisances unto the supreme transcendence, who is eternally distinguished by his internal potency. His indistinguishable impersonal feature is realized by intelligence for self-realization. I offer my obeisances unto him who, by his pastimes, enjoys the creation, maintenance, and dissolution of the cosmic manifestation. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान को नमन करता हूं, जो अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा इस जगत से अलग है, और मैं उन परम पुरुषोत्तम भगवान को अपना नमन करता हूं, जो अपनी दिव्य लीलाओं के कारण इस सृष्टि को प्रकट करते हैं, इसका चलाते हैं और इसका विनाश भी कर देते हैं। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद। तो शाश्वत स्वरूप, तो शाश्वत स्वरूप मतलब भगवान, भगवान का जो रूप है, भगवान जो स्वयं है, भेद, भगवान इस जड़ जगत से अलग है। उनकी अंतरंग शक्ति उन्हें अलग करती है इस जड़ जगत से। इस जड़ जगत से उनका कोई संबंध नहीं है, वो इससे अलग है। तो और उन्हें, उनकी जो शक्ति इससे अलग करती है वो कहलाती है अंतरंग शक्ति। तो ये जो बहिरंग शक्ति है, जो ये जड़ जगत जिसे हम कहते हैं, ये भगवान की बहिरंग शक्ति यानी बाह्य शक्ति। ये भगवान को इस जड़ जगत से अलग करती है, अंतरंग शक्ति। तो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति में रहते हैं। इस जड़, जो ये जड़ जगत है बहिरंग शक्ति में, वो उससे संपर्क है, उसका संपर्क है भगवान से, लेकिन भगवान की, भगवान उसमें उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इसको चलाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कोई मनुष्य का ऑफिस है और उसका घर है। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी था, वो एक देश के, किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलने गया। तो सुबह वो पहुंचा राष्ट्रपति भवन में। तो जब वहां वो पहुंचा उस देश में, तो सुबह वो पहुंचा और उसकी शाम को वापस अपने देश में वापस आने का उसका उसने प्रयोजन कर लिया था, फ्लाइट का टिकट ले लिया था। तो वो जब पहुंचा दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलने, तो उस राष्ट्रपति के साथ उसकी जो मीटिंग थी आप कह लो, या उसको मिलना था, वो सुबह के समय मिलना था। तो जब राष्ट्रपति भवन पहुंचा वो आदमी, तो उसने राष्ट्रपति
के जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे कहा कि मुझे राष्ट्रपति जी से मिलना है। तो जो सेक्रेटरी था, जो असिस्टेंट था, उसने कहा ठीक है, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, अंदर साहब जो राष्ट्रपति हैं वो थोड़े अभी बिजी हैं, वो अभी किसी महत्वपूर्ण उनकी सभा चल रही। तो वो वहां पे प्रतीक्षा करता रहा, काफी समय बीत गया। तो उसने सोचा कि मैं खिड़की से देखता हूँ कि अंदर राष्ट्रपति जी कर क्या रहे हैं। तो जब खिड़की से चुपके से देखता है तो देखता है कि राष्ट्रपति जी घोड़े बने हुए हैं और उनका जो पोता है वो उनके कंधे पे बैठा हुआ है। अब आप देखिए, कहाँ वो राष्ट्रपति है पूरे राज्य का, पूरे राष्ट्र का, और वो एक छोटा सा बच्चा उनके कंधे पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो अब ऑफिस में तो सभी उनको बोलेंगे राष्ट्रपति जी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन उनके घर में उनकी माँ उनको डांटती भी है, उनके पत्नी भी उनको डांटती है, उनके बच्चे भी, उनका पोता आके उनको मुक्का भी मारता है। तो वहां पे कोई उनको राष्ट्रपति नहीं बोलता, ना उनको समझता है। घर में वो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही रखे जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो जड़ जगत है, ये भगवान का ऑफिस है। यहाँ पर सब लोग भगवान विष्णु को हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, सारे देवता लोग भगवान के पास जा भी नहीं सकते। लेकिन गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं, वो भगवान का घर है, वहीं पे रहते हैं वो। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि गोलोक एव निवसति, मतलब भगवान का जो निवास स्थान है वो गोलोक है, गोलोक वृंदावन है। तो वहां पर भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में है, और वहां पर उनके जितने भी भक्त हैं उनके साथ उनका जो संबंध है वो शाश्वत है। यशोदा मैया, जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत, ये अंतर है कि वहां पर भगवान अपने लोगों के साथ है, वो उनका घर है, और यहाँ पर भगवान ऑफिस की तरह विष्णु के रूप में है। अंतर कुछ नहीं, भगवान विष्णु वो भी भगवान के ही विस्तार हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिस की तरह है। यहाँ पे भगवान के लोग नहीं रहते, भगवान रहते हैं गोलोक वृंदावन में अपने दिव्य सारे शुद्ध भक्तों के साथ, और वहां पे उनकी लीला जो है वो शाश्वत नित्य चल रही है। तो ये अंतर है जड़ प्रकृति में और आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में। 15वां श्लोक। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा सम्यन्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा सम्यन्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Let me take shelter of the lotus feet of him whose incarnations, qualities, and activities are mysterious imitations of worldly affairs. One who invokes his transcendental names, even unconsciously, at the time he quits this life, certainly is immediately washed off the sins of many, many births and attains him without fail. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उन भगवान के चरणों का आश्रय लेता हूं जिनके अवतार, उनके गुण, उनकी लीलाएं इस जड़ जगत में दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं, और कोई एक बार भी उनका नाम
यदि उच्चारण कर ले, भले ही वो पूरे होश में न भी हो, तो भी अगर शरीर छोड़ते समय मनुष्य भगवान का नाम ले ले तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, कई जन्मों के सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है और भगवान को पा लेता है। अब आप देखिए, तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि। तो भगवान के अवतार हैं, उनके गुण और उनके कर्म है वो विडम्बनानि। विडम्बना मतलब वो भ्रमित कर देते हैं। जो नास्तिक लोग हैं उनको भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। बड़ी बड़े भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं, पूतना को मार दिया, घासुर को मार दिया, अरिष्टासुर को मार दिया, रावण को जाके मार दिया। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब अद्भुत, विडंबना है, साधारण लोग उसको समझ भी नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नामान ये सुविगमे विवशा गृणंती। तो कोई एक बार भी यदि भगवान का नाम ले ले तो ते अनेक जन्म शमलम, उसके अनेक जन्म, जितने भी जन्म उसने लिए हैं उसके जितने भी शमलम, शमलम का मतलब होता है पाप, तो उसके जितने भी पाप इकट्ठे हुए हैं कई जन्मों से, सहसैव हित्वा, वो तुरंत ही वो नष्ट हो जाते हैं। हित्वा मतलब नष्ट हो जाना। और सम्यांति अपावृतमृतम, और वो अमृत यानी वो भगवत धाम वापस चला जाता है, वो अमर हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उन भगवान के चरणों का आश्रय लेता हूं। तो भगवान के अवतार सारे अद्भुत हैं। वो देखने में एक साधारण मनुष्य जैसे लग सकते हैं, लेकिन वो साधारण होते नहीं हैं। जैसे कई बार एक राजा भी होता है, वो जेल में जाता है अपने कैदियों को देखने के लिए कि उसके कैदी लोग कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो उसी के नागरिक हैं, उसी की प्रजा है। तो कई बार राजा उन पे कृपा करने के लिए जेल में भी जाता है, उनको देखने के लिए वो कैसा कर रहे हैं। तो अब राजा तो जेल में गया है, लेकिन वो जेल के नियम राजा के ऊपर लागू नहीं होते। वो राजा जेल के अंदर ही है, लेकिन वो जेल के नियमों से हमेशा ऊपर होता है। जेल के नियम राजा के लिए नहीं है, वो उसकी प्रजा के लिए। उसी प्रकार से भगवान इस जगत में आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, लेकिन वो कभी भी इन लीलाओं से प्रभावित नहीं होते। देखने में लगेगा कि वो भी एक साधारण मनुष्य की तरह ही अपने कर्मों को कर रहे हैं। जैसे कोई अगर नाटक करता है, नाट्य क्रियाएं जो होती हैं, एक्टिंग करते हैं लोग, तो एक आदमी उसमें भिखारी बन सकता है, लेकिन वो वास्तविक में भिखारी नहीं है। तो उसी तरह से भगवान इस जड़ जगत में आके अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं, और इन लीलाओं को सुनना अमृत है। और कोई थोड़ा सा भी यदि भगवान की उन लीलाओं को सुन ले, और यहाँ पर क्या कह रहे ब्रह्मा जी, नामानी, भगवान का नाम यदि कोई ले लेता है, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो कोई एक क्षण के लिए भी थोड़ा सा भी भगवान का नाम यदि ले लेता है, तो वो सारे इस अपने पापों से मुक्त हो जाता है। और यदि अंत समय अपने जीवन के अंतिम काल में यदि कोई भगवान का नाम ले ले, तो वो सारे पापों से, अपने कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा और सीधा वो भगवत धाम प्रवेश कर जाएगा। और इसीलिए भगवान आकर अपनी लीलाएं करते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा जो है, उनकी लीला जो है वो अमृत है। और यदि मनुष्य उसे सुने, श्रवणम, और साथ ही साथ यदि भगवान का नाम ले, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और वो भगवत धाम वापस प्रवेश कर जाएगा। और वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तम अजम प्रपद्ये,
तो मैं उस भगवान के चरणों का आश्रय लेता हूं। तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सब तक ये संदेश पहुंच सके। आज यही अपने सत्र को विराम देंगे, इस चर्चा को अगले सत्र में आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।